the market from the web. But how you will use the same, that is the issue. So that you may not trap under academic dishonesty, or you can say that the plagiarism. That is very important concept, a very burning issue as of now in our academics. Because everywhere you will see that when we are pursuing any research as well as any manuscripts we are writing, we always discuss about कहीं plagiarism तो नहीं है, plagiarism को देख के रखना, plagiarism नहीं होना चाहिए. It means your document must be original one. And one thing we have to be very much clear in our mind, that we have to correct ourselves. We generally say that 10% plagiarism is allowed. Clearly? So we have to be correct ourselves there. That is 10% similarity is allowed, not the plagiarism. Plagiarism na aaj allow hai, nahi since inception of the academic society is allowed. So plagiarism is not allowed, only similarity is allowed. So I will discuss with you about what is the meaning of the plagiarism, and what are the types of the plagiarism, and what is the University Grants Commission Regulation 2018, and what is the self-plagiarism, because that is very important. We are discussing, and many people, they are trapping under the Self-Plagiarism Act. They don't feel that what is the meaning of, but they don't know about what is the meaning of the same and how they will avoid the same. And thereafter, I will give the live demo to you onto the platform of the Turnitin, and I will tell you what is the role of the teacher over there. So I'm just going to share my PPTs with you, my screen with you. Let's see here. Just wait. Okay. See PPTs. Visible? Yes, sir. Yes. Okay. I have to open both. Now see here. Just wait. I will not go with the background of the higher education institutions or the concept. I will tell you that this definitions of plagiarism and academic integrity. I will discuss only one definition, because many definitions are available on the web, and you can consult the dictionaries also, because they have defined the concept of plagiarism over there, and very precisely they defined over there. But I will discuss only one definition according to University Grants Commission Regulation 2018. What they say, plagiarism means the practice of taking someone else's work or idea and passing them as one's own. When you just take the idea of anyone and passing, and some other work, some other material, and passing them as one's own, that would be the part of plagiarism. Now see here, suppose one idea published in the signage language, and you take the same idea without taking the permission, as well as without quoting and without giving the citation to original author. What you do, you just take the idea and publish in your own language. Then see, and you think that who will trap you and how you will trap, because in the market so far there is no machine that can trap under the idea plagiarism. आज तक संसार में कोई ऐसी मशीन नहीं है जो आपको idea plagiarism के तहत ट्रैप कर सके. Now where you will trap and how you will trap and who will you trap, आपको कौन ट्रैप करे, कब होंगे, कैसे होंगे, ये आप देखिए आप. In the previous session I discussed with the public access platform. It means from the University Grants Commission, it is mandated for the institutions, those who are offering the research, clearly, or higher education, you can say that, they have to sign the MOU with the InfluNet for Shodh Ganga repository. So whatever you are conducting in the name of the research, you have to upload onto the platform of the Shodh Ganga repository after जब उसने आपने उसको दे देंगे, after मतलब reward, afterward the, just wait, after giving the final certificate to students, final submission देने के बाद जब वो डॉक्यूमेंट होगा, तो यू हैव टू अपलोड ऑन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द शोध गंगा रिपोजिटरी. वो आपको वहां पर अपलोड करना होगा. अब देखिए आप होगा क्या, मे बी आफ्टर 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, maybe at the age of the supranation, you may be trapped under the same, because when Chinese people will see
that this gentleman, this lady has taken his or her idea and published by own name, then the concern will file a complaint against you. Maybe after 20 years, maybe after 25 years. So then you would be trapped under the idea plagiarism. So what you have to do, if you are taking the idea, no doubt, we generally take the idea for conducting our research. So what we have to do in the present time, as of now, we have to give the name of we have to mention and we have to take the permission from the original source of the information, from the original author. If you do not have the time just to take the permission, then you have to mention the name of the concerned author in the references, in your references or in the caption. Thereafter, you are free from the plagiarism under idea plagiarism. Clearly, otherwise you may be trapped under the idea plagiarism. That is very important. Now see here, related words to plagiarism: infringement, piracy, falsification, appropriation, fraud, borrowing, theft, stealing, and creeping. These are the related words to plagiarism. Now see, I am just opening another one, that is important principles of academic integrity, honesty. You must be very much honest with your research document or with your research. Clearly, trust. You have to show the trust among each other. Fairness. You must be very much fair when you are writing your thesis. Respect and respect. You have to respect. Respect means whenever you are taking the material from another source, you have to respect means you have to cite the name of the author over there. Don't claim that this is your material just to rephrase the same and claim that this is your material. No, never do like that. When after rephrasing the same, you have to mention the name of the original author over there, of the source of the same information. Thereafter, you are free from the plagiarism. Now, responsibility. You have to take the responsibility. That is your document and that must be authentic one. Then you can take the responsibility. Then you would be in the position just to take the responsibility. Otherwise, trap हो गए तो क्या कहोगे? I was not knowing then. I was not knowing when and how to cite. मुझे नहीं पता था कि मुझे cite कब करना है, मुझे rephrase कब करना है. तो such type of the, you can say that plea we take when we trap under the plagiarism. Now see here. I already told you that I will not discuss the definition because many web definitions are available on the web. Now see here, that is very important. What is plagiarism? Deliberate plagiarism, and you can say that, and accidental plagiarism. That is very important. Deliberate means rewriting from books or articles. Means हम जब किसी बुक से लेते हैं और आर्टिकल से इंफॉर्मेशन लेते हैं, we feel the हरियाणा में एक जनरली कहावत है, मुझे मतलब मैंने सुना है ऐसा और मैंने ऑब्जर्व भी किया है, देखी जाएगी जो होगा. Clearly, so such type of the casual attitude will not work with your research. Don't say like that, देखी जाएगी जो होगा, देख लेंगे जो हमें ट्रैप करेगा, बाद में देख लेंगे उसका. No, never do like that. Please avoid the deliberate plagiarism, rewriting from books or articles. If you are doing the same, you have to rephrase the same. You have to mention the name of the author. You have to give the name of the author in your reference and your bibliography if you are consulting anything. Clearly, copying and pasting from web pages and online sources to create a patchwork writing. What do you feel? Most of the scholars, they feel that they are taking the material from one source on the same topic, one para from different source and one page from different source. So likewise, they consult 60 sources and just take the material from the same one line, two line or one para, and they feel that how the software will check the same, how the software will identify, because I have taken from different sources, 60 sources. So my dear, please avoid the patchwork writing. Whenever you will upload your document onto the platform anti-plagiarism software, so if the same material is available on the web, it will show that you have taken one line from this source and second line from this source, third para from this source. It will show and it will reflect under the similarity. So be careful. Please avoid the patchwork writing. Don't feel that you are so smart. I am just giving a statement with very confident that technology is sharpened day by day. How much you are smart, don't feel that technology is also more smart as comparison to we people. Clearly, so if we are doing the patchwork writing, we have to avoid the same. Otherwise, we may be trapped under the academic dishonesty, or you can say that the plagiarism or the copyright infringement. And buying, downloading or borrowing a paper. What do we feel? Suppose कीजिए हमने एक पेपर कहीं से पेमेंट पेज पे उसको लिया है, यानी कि वो अवेलेबल था किसी प्लेटफॉर्म पे, बट इट वाज अवेलेबल ऑन पेमेंट बेसिस. सो व्हाट वी डू, वी फील दैट दिस इज आवर मटेरियल बिकॉज आई हैव पेड फॉर द सेम. मैंने इसके लिए पेड किया है और ये मटेरियल अब मेरा हो गया है, मैं कुछ भी कर सकता. नो, you have paid just to consult and just to take the idea over there. This is not, because copyrights are with the
कंसर्न वेंडर और द कंसर्न पब्लिशर। कॉपीराइट आपको ट्रांसफर नहीं किया उसने। सपोज कीजिए आपने 1000 में $5 में कोई पेपर खरीदा, डोंट फील दैट कि दे हैव ट्रांसफर्ड द कॉपीराइट टू यू। वो कॉपीराइट कभी ट्रांसफर नहीं करते आपको। यू कैन कंसल्ट एंड टेक, यू कैन यूज फॉर योर रिसर्च पर्पस, but don't feel that this is your material. So if you are taking anything from the same, you have to mention the name of author over there, and you have to cite the name of the author, and you have to rephrase the same if you are taking any material from the same buying, downloading or borrowing or borrowing any paper. Clear? जो आपने डाउनलोड किया है या खरीदा है या कोई उधार लिया पेपर लिया, उसमें से अगर आप ऐसा करते हैं तो you have to be very much careful, and otherwise you may be trapped under the deliberate plagiarism. Clearly? Just wait. हाँ सुन सर, ये सर ने ना सीएससी में 2 चीजें। जस्ट वेट। हाँ जी, एक तो एएसपीपी, एक मिनट, जस्ट मैं ये तो कर दूं इसको ऑफर। मेरे को भी याद आया। ओके, ठीक है। urgent official work, please wait for 30 seconds only. Sure, sir, sure. Okay, thank you very much for showing your patience. Okay, now see here. Okay, so that was about the deliberate plagiarism. Now accidental plagiarism. So sometimes we take the plea on behalf of the accidental plagiarism. When we trap under the plagiarism, we feel that, and we just take the plea that I was not knowing that when and how to cite. So this is the duty of the concerned student. Don't blame your teacher as well as your institution that they did not give the information. Not audible, sir. वेट फॉर फ्यू मिनट, शायद कोई नेटवर्क इशू है सर के साथ, तो वेट फॉर फ्यू मिनट्स। सर के यहाँ ना लाइट चली गई है एंड ही इज रिकनेक्टिंग,
तो आप लोग जरा 5 मिनट वेट करिए, वो अभी ओके मैम। जुड़ जाते हैं हमारे साथ, ठीक है? जी मैम, बोल दिया मैंने कहा नेटवर्क का इश्यू, वेट फॉर फ्यू मिनट। जी जी जी, वी आर हियर ओनली। नीरज सर, आप हैं वहाँ पे? आर यू देयर नीरज सर? Am I audible to you, all participants? Yes, ma'am. Yes. Okay. भारत सर, कल हमने ओके, थैंक यू। मैं ना ये कहना चाह रही थी कि हम जितने पार्टिसिपेंट हैं ना, कोई भी एक ग्रुप क्रिएट कर लें। कल हमारे HRDC के ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस थे, उससे क्या होता है, इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो है वो ऊपर चले जाते हैं। आज शायद लोगों को लिंक ढूंढने में भी दिक्कत रही होगी, स्क्रॉल करना। तो एक ग्रुप बना लें जिसमें हम सभी पार्टिसिपेंट हो, तो जो भी छोटी मोटी क्वायरीज हैं वो हम आपस में पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है पारस सर, आप देख लें अगर आप कोई ग्रुप क्रिएट करना चाहें तो। उससे हमारे लिए इजी होगा, जिस तरह के भी कोई स्लाइड शो स्क्रीन शॉट शेयर करने हैं या किसी भी तरह का कोई भी डाटा हम आपस में शेयर करना चाह रहे हैं, और हमारे आगे के लिए भी अच्छा रहेगा। कभी कोई कॉन्फ्रेंसेज हैं, कोई सेमिनार्स वगैरह, उसके मैसेजेस। Sorry, connection were lost and I am back. Sorry for inconvenience. Yes, we are here. Yes, thank you. I am just again sharing my screen with you. Okay, it is visible. Okay, so I was discussing about the accidental plagiarism. So it is the duty of the concerned scholar just to know about the citation pattern, because don't blame your department, your teacher as well as your university or your college. Because I conducted a survey, मैंने सर्वे कंडक्ट किया 3 यूनिवर्सिटीज में, मिनिमम ए स्कॉलर का 25 था और मैक्सिमम 55 था। तो डोंट फील दैट कि a guy of 25 years old is immature. That is quite mature, and he or she has to knows that how they will cite if we are taking the material from web or from any other information sources. So they have to know about. Don't take plea on behalf of the accidental that I was not knowing. So it will not work. Clearly, not knowing how to paraphrase or summarize. Don't take plea on behalf. I'm not good enough in the language, so I was not knowing that how to rephrase the theme, how to summarize. No, this is your discretion. This is your duty, not discretion. This is your duty, and this is your moral duty even to know that how you will rephrase the same and how you will summarize the same. Suppose you are weak in the language, you can take the help of some professional as well as your peer group friend also. If anyone is good enough in the language, you can take the help of your teacher, but do not just take the material from other source and do not pass the same by your own name just to show that yes, I am also the scholar and I am doing hard work. Don't do like that. ऐसा मत कीजिए ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत अच्छा स्कॉलर हूँ और अच्छा काम कर रही हूँ और मैंने इधर से कॉपी करके दे दिया, लो जी मेरा मटेरियल। नो, please avoid the same. If you are not good enough in the language, you can take the help of the professional, because in the market so many professors are available. Even you can take the help of your friend.
if the concern is good enough in the language concern. Not knowing what common knowledge is. According to University Grants Commission, common knowledge would be the part of the similarity, not the plagiarism. But whatever you are taking as granted in the name of the common knowledge, you have to be very much confident that is the part of the common knowledge. Suppose sky is blue, that is a part of common knowledge, that is universal truth, sky is blue. But if it is a name of the novel, then how you will decide that is the part of common knowledge or not? Common knowledge or not? The concerned teacher will tell this is the part of common knowledge or not. Clearly? So this is the duty of the teacher over there. Teacher has to identify this is the common knowledge, this is not the part of the common knowledge. That would come under the plagiarism, that would come under the similarity. तो ये टीचर को देखना है. Recycling an old paper. अगर आप old paper को recycle करते हैं, suppose you just take the paper which is published in 1920, जो 1920 में पब्लिश हुआ था, आपने देखा कि this is 2022 and you are taking a paper which is published in 1920, जो 1920 में उसे कौन देखेगा? No, because due to ICT things are being transparent day by day. जो चीजें हैं वो day by day transparent हो रही है. So if you are taking the material from such type of the information sources, and whether it is an old one, whether it is 100 years old, if you are taking the sum, please just respect the other author. Just respect the contents of the author. How you will respect? Just give the citation, just acknowledge the same, and just give the caption of the concerned author. Don't recycle an old paper with your own name. What we are doing, what we do generally, not most of the people, but few scholars they are doing. Just they take the old material and just search whether it is available on web. वो सर्च करते हैं ये वेब पे अवेलेबल है. अगर वेब पे अवेलेबल नहीं है तो वो ये ट्रिक लगाते हैं कि जब वेब पे अवेलेबल नहीं है, how the software will show under similarity or the plagiarism. No, my dear, avoid the same. You are right over there. If the same material is not available on the web, the software will not show the similarity. Then what you will do, when your document will come in the public domain, maybe your friend see that yes, my friend has taken the material from another one and did not mention the name of the original author, did not mention the name of the author over there. Then your student, then your friend, then your peer group friend will make complaint against you. So be avoid the recycling an old paper. Clearly? So this is the right example. If you just buy candy from the market and you feel that this is your product, no doubt, for candy you have paid for the same. You can eat the same, you can throw the same, whatever you want to do the same you can do because you have paid for the same. But whatever material is available on the, whatever text and whatever ammunition is available on the wrapper of the candy, अगर उस टॉफी के रैपर पर कुछ अंकित है या कुछ छपा हुआ है या कुछ टेक्स्ट है, and this is worthful for your research, और आप रिसर्च के लिए worthful है, and you want to take the same, you cannot take directly. Don't feel that you have paid for the same. You have paid for the comedy, you have paid for the candy, not paid for the wrapper or the wrapper material. आपने रैपर के मटेरियल के लिए नहीं किया. If you want to take anything over there, you have to take the permission from the concerned house, concerned publishing house, or as well as the concerned author. Clearly, and you have to cite the same. Clearly, तो या तो आपको परमिशन ले या उसको साइट करें, एक आपको काम करना होगा. Better is you have to take the permission. Clearly, तो आप उसे परमिशन लें और तब उसके बाद आप उसको यूज करें. That would be better. Now see here, I'm just giving the few situation, few instance, and you will be so surprised to know that how you will write if you are taking the material from any source from one line to last line. आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सपोज कीजिए जो इंग्लिश का आदमी है, जो लॉ का आदमी है, वो कैसे करेगा रिसर्च? Because they have to construct the secondary sources. We have the primary sources. We have three type of the sources: primary, secondary, and tertiary. जो प्राइमरी सोर्सेज हैं वो हमारे लेटेस्ट न्यूज़पेपर हैं, आप हमारी जो हमारी वो ईयर बुक्स छपती हैं वो दैट कैन बी द प्राइमरी आल्सो. हमारी डिक्शनरी दैट वुड बी द सेकेंडरी सोर्सेज आल्सो. सो व्हेन दे कंसल्ट एंड व्हेन दे डू देयर रिसर्च by using the secondary sources, so they cannot do the same because whenever they are taking the material it will show under the similarity or the plagiarism. So how they will do the same? So these instances will clear the things. Now many people do not like green eggs and ham. कुछ लोग एक statement है exactly is this, yes it is a plagiarism because
it shows that I have taken the concern, or you can say that the concern has taken from one word to last word. So it would be the part of the plagiarism. Now see here. Now I kept the same in double inverted commas. Again, is this a part of plagiarism? Because it is showing that I have taken the same and I kept the same in double inverted commas. But I did not mention the name of the author over there. Clearly, now see here, I mentioned the name of the author, Jason 1960. But I did not mention kept the same in double inverted commas, means quotes. In the present environment, software does not understand the language of, according to Dr. Shefali Nagpal, many people do not like green X and ham. It will not work. What will work? You have to mention the name of Dr. Shefali in caption, and you have to keep the same information. If you are taking from one line to last line, suppose Dr. Shefali has given a definition, and you want to take, suppose Newton law, you want to take exact, because you cannot say the same. If you will rephrase the same, the essence would be different. Essence uska different ho jayega. So if you want to take from one word to last word, some definitions, some standard equations, then what you have to do? You have to keep the same in double inverted commas, and you have to mention the name of the author in caption over there, in caption as well as in your references. Clearly? Now see here. This is the exact way just to write the same. I kept the same in double inverted commas and mention the name of the author over there. Now this is not the part of plagiarism. Ye plagiarism ka part nahi hai. So you can take the material from other source, no issue, but how you will take the same, how you will avoid the plagiarism, this is the way just to avoid the same. Don't feel that just put a inverted commas in first in your research and second double inverted commas in the last of your research, and that would be free from the plagiarism. No. Whenever you will upload your document, such type of document for checking the similarity, software will flash a message. What message you will get? The most or maximum or whole thesis is containing the material in double inverted commas. Then your guide will see and your supervisor will see that where you have put the double inverted commas over there, then you would be trapped under the plagiarism act. So avoid the same. Clearly? Now, just this one. Okay. So that was about the plagiarism, and these are the related terms to plagiarism, related words to plagiarism. Now see here, definition and responsibilities of educational institutions. So some responsibilities have defined under UGC Regulation 2018 of the HEI, means your university and your institutions responsibilities. What they have to do? They have to provide the anti-plagiarism software to the faculty members so that they can check the similarity of their manuscripts as well as the student assignments also. So they may produce the original research. Clearly? So ये HEI की ही ड्यूटी, HEI means हायर एजुकेशन, योर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एंटी प्लेजियरिज्म टूल का वो कोई एक्सेस दें. अब उसको क्या करना है? अब देखिए जो टर्निटिन है वो पेमेंट बेसिस पे है. क्लियरली दैट इज ऑन पेमेंट बेसिस, दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट बट ऑन पेमेंट बेसिस, नो डाउट, नो इशू. एंड single license is not available. Clearly? So what you have to do, suppose your institution has financial constraint और आपके इंस्टीट्यूशन में फाइनेंस भी प्रॉपर नहीं है, मतलब कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं आपके साथ, then what you have to do, what you do, आपको क्या करना है, क्या करेंगे आप? आपको करना ये है कि आप अपने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को, लाइब्रेरियन को मैटर परस्यू करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आपके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से कि आप जो इनफ्लिबनेट के साथ एक MOU साइन करें. इनफ्लिबनेट इज ए एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया working under the Ministry of Education, that is Information Library Network. It is a government product, it is a government platform, and they are offering the free services of anti-plagiarism software, namely original, means Urkund. अभी उनको नाम चेंज कर दिया. उर्कुंड जो है पहले नाम था इसका, जो अर्लियर नेम वाज उर्कुंड, नाउ द नेम इज ओरिजिनल, OURIGINAL, that is the current name of the Urkund. Clearly? And they are offering the free services of but for the same you have to sign the MOU with the Inflibnet. And for doing the MOU, what you have to do, they have given some parameters over there. Now see, I am just giving a live demo to you how you will do the same. Now go there, Google Shodh Ganga. Shodh Ganga repository, click over there, shodhganga.info.ac.in. This is the web address of the same. How you will sign the MOU, I am just showing you how you will do the same. It is working, just wait.
This is the home page. More than 3 lakh theses are available for our accessing. We can access all these theses. These are the top 10 universities, those who are contributing more, and University of Madras is on the top with 13,111 theses. And show all the universities. It is showing all the name of the university, those who signed the MOU with the InfluNet. और ये मैंडेटरी कर दिया है कि आपको MOU तो साइन करना ही है, आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा. डोंट फील दैट कि हम नहीं करेंगे. नो, maybe after 1 year, 2 years, when government will stop your grants, then you have to do the same clearly, and that is a very authentic platform. Whatever you are sending over there, that must be original one. Otherwise, you may be trapped under the Plagiarism Act. Now, more than 3,39,000 theses are available for us, and all are downloadable. You can download any thesis. You can see the thesis. You can see the pattern, but you cannot take the more material from the same. And if you will take the same without proper citation acknowledgement, you will be trapped under the plagiarism. Now see here how you will download MOU. Download में आइए, MOU के साइन कर ली. यहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स है. You have to append the signature. Your head has to append the signature and then send to them. And thereafter they will also append their signature, and the MOU will be started. Now see here, application form for fund. अगर आप सपोज कीजिए आपके इंस्टीट्यूशन के पास फंड नहीं है एंड यू वांट टू डिजिटाइज योर थीसिस, सपोज कीजिए आपके पास डिजिटाइज इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी बनाना चाहते हैं आप, और अपनी थीसिस अगर आपको डिजिटाइज करनी है, यू वांट टू डिजिटाइज योर थीसिस एंड यू हैव द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, देन यू कैन ask for the funds from Shodhganga platform. Clearly, application form for the funds. Clear, download MOU for this is if you are under the CFI central funding institution के आते हैं तो आपको यहाँ से करना है. अगर आपके पास कोई सा फंड नहीं, सेंट्रल फंडिंग के नहीं अंडर आते आप, तो डाउनलोड MOU. सिंपली यू हैव टू डाउनलोड दिस डॉक्यूमेंट, और ये फंड के लिए डॉक्यूमेंट, आप फंड मांग सकते हैं इनसे. दे विल प्रोवाइड द फंड्स क्लियरली. एंड ये देखिए इन UGC ने कहीं इन्होंने दिया है, सेल्फ प्लेजरिज्म की पॉलिसी दी है, UGC नोटिफिकेशन पर 2018 दिया है. MPhil और PhD के अमेंडमेंट के जो स्टैंडर्ड आपको फॉलो ये यहाँ दिए इन्होंने, ये 16 के हैं, ये 9 के हैं, और ये UGC गाइडलाइंस फॉर शोधगंगा. अगर आप शोधगंगा में कैसे अपलोड करेंगे, यहाँ पर सारी गाइडलाइन इन्होंने दी हैं. तो यू हैव टू गो अकॉर्डिंगली इफ यू वांट टू टेक द एक्सेस ऑफ एंटी प्लेजियम सॉफ्टवेयर, दैट इज उरकुंड. दे आर ऑफरिंग द सर्विसेज ऑफ उरकुंड, दैट इज आल्सो ए गुड सॉफ्टवेयर. क्लियरली, सो दिस इज द वे जस्ट टू साइन द MOU with the InfluNet. So this is the duty of the HEI, just to sign the MOU with InfluNet and just providing the access of any anti-plagiarism to their faculty members. Now further, objectives of the regulation. These are the objectives of the regulation. What are the objectives? To create awareness about the academic integrity and fair conduct of research, thesis, dissertation, project, report, book. To establish control mechanism through training and education to facilitate plagiarism-free research. Because on behalf of the plagiarized content, we cannot gain any importance, as well as we cannot gain any citation. And on behalf of the citation, definitely you may be knowing that what is the role of the citation in your research matrix. All the H index, G index, I10, I20 or alternate matrix. So whatever the research matrix, these are working on the citation. Whatever citation you will get, they will calculate the same and will calculate your H index. सपोज करो आपके रिसर्च का H इंडेक्स ये है, आपका इम्पैक्ट फैक्टर ये है, जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर है, आप उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर अगर आपको देखना है, वेरी इजी प्रोसेस. इफ यू वांट टू कैलकुलेट द सेम, सपोज इट इज बेस्ड ऑन द लास्ट 2 years एवरेज पब्लिकेशन एंड द एवरेज रिसीव्ड द साइटेशंस. सपोज एक मार्केटिंग का जर्नल है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मार्केटिंग 2020 का, आपको वो देखना है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, IF क्या है. देन व्हाट यू विल डू, you have to get the citation received in 2020 plus citation received in 2021 divided by paper published in 2020 plus paper published in 2021. सपोज कीजिए आपको 2020 में साइटेशन मिले 400 एक जर्नल के लिए, दैट इज ए जर्नल मैट्रिक्स. इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल मैट्रिक्स होती है, ना कि कोई ऑथर का इम्पैक्ट फैक्टर होता है. कभी नहीं सुना होगा कि ऑथर का इम्पैक्ट फैक्टर ये है. नो, you always get the information and you always listen that this is the impact factor of a journal. और सपोज कीजिए आपको साइटेशन 20 में मिले 400 प्लस और 21 में मिले आपको 300 और डिवाइडेड बाय
आपने इस जर्नल में पर्टिकुलर जर्नल पेपर पब्लिश हुए 2020 में 100 और प्लस 21 में पब्लिश हुए 80, तो 400 प्लस 300 700 डिवाइडेड बाय 180, यानी कि 100 प्लस 80, तो उसको डिवाइड करके बताइए कितना आया। 700 डिवाइडेड बाय 180, तो ये आ गया जी आपका 3.88। इट मींस द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ द मार्केटिंग जर्नल फॉर 2022 that is 3.88. This is the impact factor of the journal. So on behalf of the plagiarized document, you won't earn the citation, and without citation you cannot enhance and increase your research matrix. And one thing I will advise here, whatever you are writing, whatever you are publishing in the name of the manuscript of the research, you have to just prepare a summary of the same and try to publish necessarily, and try to you can try to publish the same in newspapers. You can use the blogs for getting the hits, because alternative matrix is based on the hits, not the you can say that citation. So blogs, if you are not using the blogs, if your friend is using the blogs, then you can put the summary of your research on the blogs. Summary may be of only one paper, one page, not paper, one page, and or 1.5 page, not more than this. So just just make a habit, prepare the summary of your research and put the same on blogs and Facebook also. So whatever hits and what are liking you are getting from the different scholars and the authors and the Facebook users and the social media users, accordingly your alternative scores will increase, and on behalf of the alternative score you can get the fund from the different or government as well as the प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, आप उन दोनों से ही फंड्स को पा सकते हैं। सो ये एक बड़ा डीमेरिट है प्लेगराइज कंटेंट्स का, आपको साइटेशन नहीं मिलेगा। और जस्ट अवॉइड द प्रीडेटरी पब्लिकेशंस आल्सो। हम क्या करते हैं, कोई पब्लिकेशन को जल्दी से जल्दी करवाने के लिए हम प्रीडेटरी पब्लिकेशंस पे जाते हैं। प्रीडेटरी पब्लिकेशन का मतलब है कि जो ऑथेंटिक नहीं है, जो बोगस है, जो फर्जी है, यू कैन से दैट क्लियरली। तो वी हैव टू अवॉइड द प्रीडेटरी पब्लिकेशन। वन टाइम वी मे गेट हैप्पीनेस दैट यस आई गॉट माय पब्लिकेशन विद इन 1 or 2 days, मैंने अपना पा लिया है, 1 या 2 दिन पब्लिश करवा लिया है। लेकिन आपको ये जानकर अति दुख होगा कि जिस जर्नल में आपने छपवाया है, जिस प्रीडेटरी पब्लिकेशन में आपने यूज किया है इसको पब्लिकेशन के लिए, वो कहीं पर भी किसी भी साइटेशन या किसी भी इंडेक्सिंग एजेंसी पर साइट नहीं होता। तो उसमें क्या होगा कि आपको साइटेशन नहीं मिलेंगे। और इन द कमिंग टाइम when you face the interview for the higher post, generally they will ask for what is your H index. You will claim that yes, I published 50 papers, and when they will ask what is your H index, and maximum papers are in the predatory publication, and your H index would be 0, then you will say yes, my H index is 0. It means your research is not authentic one, and there is no efficacy of your research, and you will be so surprised over there when you will say it is 0. And they will say that sorry, your research is not good for the society, not good for your department, not good for your scholars also. You are just giving a number that you have published 50 papers. आप नंबर ही दे रहे हैं, वहां पर citation है नहीं, कुछ 0 है. So please avoid the predatory publications also. Now see here, what is the third objective? To develop system to detect plagiarism and create awareness about the punishments. आप punishments के बारे में उनको aware करना है, क्योंकि in UGC regulation they have defined the, you can say that, punishments over there. To aware the scholar about the remedies and role of higher education institution. आपको अपने स्कॉलर्स को ये भी बताना है कि रेमेडीज क्या क्या होंगी, और खाली उसको पकड़ना नहीं है, ट्रैप नहीं करना है, उसको ये भी बताना है कि what would be the remedies just to avoid the and just to curb the plagiarism. Clearly? Now see here, is plagiarism and similarity same? That is very confusing in the mind of the scholars. They feel that similarity and plagiarism both are same. No, these are the different terms. Plagiarism means when you are taking the material from any source in substantial form and published by your own name. Software will show the similarity. Software will show whether you have taken the permission. Software will show the similarity of the same. Similarity means similarity of a name, similarity of the name of the organization, similarity of your university name. That would come under the similarity. Suppose you upload your document for checking the plagiarism, you can say that or similarity. Clearly, suppose it is catching and it is showing the similarity with common knowledge or small words. Don't blame the software. Software will show the similarity whether you have taken the permission and whether you have mentioned the name of the author in your reference list. It is the duty of the teacher over there just to identify this material already
permitted and we are and used by the scholars, the teacher will decide the same, and teacher will permit just to exclude the sources to whom it is showing the matching from the platform of the anti-plagiarism software. I will give the demo to you where it would be very much clear that what the teacher has to do. Now see here, role of higher education institution. ये higher education again role है उसके सबसे बड़ा रोल तो क्या है कि उसको InflipNet से MOU साइन करना है. This is the responsibility. It is mandated from the University Grants Commission. You have to sign the MOU with the InflipNet for Shodh Ganga repository, because whenever you will submit your thesis or your research, you have to upload onto the platform of the Shodh Ganga repository for public domain access. Clearly? So be careful. Whatever you are sending over there, that must be original one or under the permissible limit of the similarity, that is 10%. And some other responsibilities are there. I will not go with the same. You can download the same document from the UGC website and undergo with the same. And thereafter, you would be very much confident about the plagiarism, because they have defined so many things over there. Now see here, that is very important. Works exclusion from plagiarism. प्लेजरिज्म से क्या क्या कार्य हटाना है आपको जो प्लेजरिज्म का पार्ट नहीं होगा. ऑल कोटेड वर्क्स रिप्रोड्यूस विद ऑल नेसेसरी परमिशन. जो आपने नेसेसरी परमिशन जिसकी ली है, रिप्रोड्यूस किया है, वो प्लेजरिज्म से फ्री होगा. लेकिन सॉफ्टवेयर सिमिलरिटी दिखाएगा तो आपको क्या करना है? अगेन आई एम जस्ट गिविंग अगेन एंड अगेन आई एम जस्ट सेइंग दैट this is the role of the teacher, because teacher is the final arbiter just to decide what part shall be considered under and what part shall be out of the plagiarism. Clearly, the teacher को देख हम क्या करते हैं generally, what is the practice we are doing in our academic institution, that we just direct the student go to library and just take the report of plagiarism of your document. And what the librarians do, they just depute one person over there. The concerned person will upload the document, download the report, and hand over to the concerned students. So maybe it is showing 35% or 40%. And you will say that I have taken the permission of this material, and again the software is showing the same. Software इसको दिखा रहा है, लेकिन क्या करना है? यही करना है, मैं बताऊंगा क्या करना है आपको. Just wait कीजिए. After 10 minutes, I will give the demo to you. Now see here, all references, bibliography, table of content, preface, and acknowledgement. So all these material would be exempted from the plagiarism. All the table of content, preface, bibliography, and references. Now all generic terms, laws, standard symbols, and standard equations. So whatever you are using the terms in the name of the standardized, you can exclude the same. That would be excluded from the plagiarism part. That would not be the part of the plagiarism. Suppose you are a student of, you are a scholar of mathematics, and you are taking the standard equation over there, some standardized equation over there, then software will show the similarity. Then what you have to do, then you have to exclude the source to whom it is showing the matching. And one thing is over there, that is 14 consecutive words. You have to give a filter over there, you have to apply a filter over there, that is 14 consecutive words. ये filter वहां पर software पे apply होगा. कैसे होगा बताऊंगा. Now see, these are the area where, आप ये देखिए आप, these are the area where you can exclude all the sources. Now see here, we generally see that 10% plagiarism is allowed. No, 10% similarity is allowed. So, but with these areas, abstract, summary, hypothesis, observations, results, conclusion, recommendation, these must be original one. Means zero tolerance policy regarding similarity. Similarity भी allow नहीं है इनके साथ. Plagiarism तो छोड़ दीजिए आप. Plagiarism तो ना आज allowed था ना पहले allowed था. Plagiarism is not allowed. But 10% similarity is allowed, but with these areas, similarity is also not allowed. So be careful. That must be original one. Abstract, summary, hypothesis, observation, results, or conclusions, and recommendation. These must be original one. You cannot take the plea that 10% similarity is allowed and with this area. No, these areas must be original one. Clear? Now see here, complaint against plagiarism. आप complaint किसको करेंगे? आपके departmental academic integrity panel होना चाहिए. Clearly, if it is not available in your institution, you can pursue the matter to head of the department or head of the institutions. Just create one of the DAA IP over there. If any matter comes, then what you have to do, the DIP will handle the same. And what would be the composition of the DIP? 3 persons would be there. The chairman of the department would be the chairman of DIP, and one senior academician outside of the department, and one person who is well versed with the functionality of the software. There would be 3 persons, and for meeting 2 persons must be available. Without 2 persons, including chairman, without
without 2 members they cannot hold any meeting. Clearly, and in a period of 45 days they have to give the reply of any of the complaint if they receive any. Clearly, उनको कोई कंप्लेंट मिलती है तो वो उनको जो है 45 दिन के अंदर उनको जवाब देना है. किसको देना है? IAIP को, इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल. तो IAIP को देना है. तो IAIP is the higher body. तो who would be the chairman? Your vice chancellor or the pro vice chancellor would be the chairman of the IAIP, and one senior academician from the concerned HI or the university, you can say that, and one senior academician outside of the university, maybe from different university or from different state, you can hire the services of the concerned person, and one person who is well versed with the functionality of the software. There would be 4 members, and the period of the DIP would be 2 years, and the period of the IAIP would be 3 years. So for meeting, 3 persons must be present, including chairman. Again, in a period of 45 days, they have to review the same, and they can cancel whatever punishment and whatever decision given by the DIP. तो ये हायर बॉडी है, जो DIP ने दिया उसको कैंसिल भी कर सकते हैं और उसको अप्लाई एज इट इज भी ले सकते हैं. इन टोटो भी दे कैन टेक द सेम, एंड बट दे हैव टू हैंड ओवर ए रिपोर्ट टू पर्सन whom इंक्वायरी रिपोर्ट इज सबमिटेड. जिसकी इंक्वायरी हो रही है उसकी रिपोर्ट उसको देनी होगी. ये ऐसे नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता क्या हो रहा है आपके साथ. नो, दे आर सपोज्ड टू गिव द रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट टू द पर्सन टू whom they are doing the same. Now see here, levels of plagiarism. They have defined the levels of plagiarism. Level 0, similarity is up to 10%, no issue, minor similarity, not plagiarism. Levels similarity only. They have defined in the name of the plagiarism, but level 0 they are saying similarities, not the plagiarism. Up to 10%, no issue. Level 1 similarity about 10 to 40%. ऐसे स्टूडेंट को क्या कहा जाएगा कि इन्हें नॉट एक्सीडिंग 6 months, 6 महीने के अंदर आप अपने थीसिस को दोबारा दें, या डिसर्टेशन को, या अपने असाइनमेंट को. Level 2, 40 to 60%. Such students shall be debarred from the submitting revised script for a period of 1 year. 1 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा. Similarities above 60%. Such students registration for that program shall be cancelled. अगर 60% से अबोव है तो उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा और HEI हायर एजुकेशन डिसीजन ले सकती है. क्लियरली नाउ सी हियर, पेनल्टी ऑन रिपीटेड प्लेजरिज्म. अगर बार बार आप रिपीट करते हैं, आप रिपीटेडली उसको कमिट कर रहे हैं, देन व्हाट वुड हैपन, यू विल गेट द पनिशमेंट ऑफ लेवल 3. लेवल 3 की पनिशमेंट्स क्या है? लेवल 3 की पनिशमेंट्स क्या है कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम, जो इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन हो, कैंसिल कर दिया जाएगा. और देखिए, इससे आगे देखिए, पेनल्टी इन केस वेयर द डिग्री क्रेडिट हैज ऑलरेडी बीन obtained. On behalf of the plagiarized item, you have already taken the benefits and credit that could be in abeyance for a period recommended by the IAIP. जो IAIP रिकमेंड करेगी वो पीरियड के लिए आपको abeyance में चले जाएंगे, और अगर आप कल्प्रिट हैं तो जो बेनिफिट्स आपने सब विड्रॉ हो जाएंगे. सपोज कीजिए अगर आपने जॉब ली है तो आपकी जॉब चली जाएगी. अगर आपने उस थीसिस के बिहाफ पे इंक्रीमेंट्स लिए हैं, इंक्रीमेंट बैन हो जाएंगे. तो प्लीज बी केयरफुल. नाउ सी हियर, these penalties have been defined for the teachers. Similarity up to 10%, no issue. That is minor similarity. 10 to 40 shall be asked to withdraw the manuscripts. आपको manuscripts से withdraw करने के लिए कहा जाएगा. Similarities above 40 to 60% shall be asked to withdraw the manuscripts. Shall be denied a right to 1 annual increment. आपका annual increment काट लिया जाएगा. Clearly, shall not be allowed to be supervisor to master, MPhil, PhD students scholar for a period of 2 years. 2 साल के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा. And अगर सिमिलरिटी अबव 60% है, अगेन शैल बी आस्क्ड टू विथड्रॉ द मैन्युस्क्रिप्ट्स, नो इशू. आपको कह दिया जाएगा अगर कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, अगर नहीं करते तो आपके 2 इंक्रीमेंट बैन कर दिए जाएंगे वहां पर. और शैल नॉट बी अलाउड टू सुपरवाइजर टू एनी मास्टर, एमफिल, पीएचडी फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years. 3 साल के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा. यहाँ पर 2 साल के लिए है, 1 इंक्रीमेंट है. यहाँ पर 3 साल के लिए 2 इंक्रीमेंट. अब आप सोचते होंगे ठीक है, बच जाएंगे, जरूरत ही नहीं किसी को गाइड बनने की. 2 इंक्रीमेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है when you will apply for the higher post, maybe as registrar or vice chancellor or in any government department. Clearly, so this report will work. This case will work for you. Then what would happen? They will say that already the concern is under trapped under plagiarism. Then what would happen? What would be the consequences? You will not get the concern post. आपको post मिलेगी नहीं, because already it will show that you are already trapped under the plagiarism. So you are doing the plagiarism activities with your research. So your candidature will not be considered for the
same cost. Clearly, that would be the consequence. Again, we see further. पेनल्टी ऑन रेपिटेटिव प्लेजरिज्म, अगर बार बार आप करते हैं उसको, लेवल 3 पे जाएंगे। लेवल 3 पे तो ये देख लिया आपने, ये है, लेकिन इसके साथ साथ क्या पॉसिबल है? सस्पेंशन ऑब्लिक टर्मिनेशन इज आल्सो पॉसिबल एज पर द सर्विस रूल्स शैल बी टेकन बाय द HEI। जो आपकी हायर एजुकेशन आपको सस्पेंड भी कर सकती है आपके इंस्टीट्यूट, और आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। वो आपकी सीवियरिटी देखी जाएगी कि सीवियरिटी लेवल क्या है आपकी प्लेजरिज्म का, क्लियरली। और जो आपने ऑलरेडी क्रेडिट ले लिया उसकी, वो पुट इन एबियंस फॉर ए पीरियड रिकमेंडेड बाय IPI एंड अप्रूव्ड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जो आपने उस पे जो बिहाफ पे बेनिफिट्स लिए हैं वो सारे विड्रॉ कर लीजिए, एबियंस में चले जाएंगे। अगर आप उसमें कल्प्रिट हैं तो आप विड्रॉ हो जाएंगे आपसे, अगर नहीं है तो आपको सारे के सारे वो रिज्यूम हो जाएंगे। So these are the punishments have defined under the Plagiarism Act UGC Regulation 2018. So that was about the plagiarism, and now I will show the live demo to you. Sir, just wait. Okay. So how you will sign the MOU? So you have to access the website of the Shodhganga. Now I am just giving the live demo to you, that is Turnitin. It is a globalized, recognized software working globally and very, very prominent one. Urkund is also prominent one, but it is available on payment basis, and Urkund is available without giving a single penny to anyone. But for the same, you have to sign the MOU with the inflippment. And your institution must be under 12B. 12B means your institution would be eligible for the central assistance. Without 12B, you won't be able just to get the free services of the Urkund. आपका इंस्टीट्यूशन जो है 12B में होना चाहिए। क्लियर? शोध शुद्धि के नाम से इन्होंने रखा है नाम, वहां पे शोध शुद्धि मिलेगा आपको। Now see here turnitin.com. This is the web address of the same, and this is the home page. ये उसका होम पेज है। क्लियर? Just wait. This is the home page of the Turnitin. Now here is the login, and for your login you need your email address, need username. This is my username and this is my password, which I will not share with you. Yes, this is the again further second home page of the same. Now first of all you have to create your class for uploading any document. Without creating your class, you won't be in a position just to upload any document. आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते। आपको पहले क्लास बनानी होगी। सपोज कीजिए आप क्लास बनाइए पहले अपनी, add class. Here is the option add class. Very easy process just to add any class. Standard, you have to go with the standard. Master and standard, you have to remain with the standard. Class name, I'm just taking the name of Dr. Renu Chaudhary. Okay, I'm just name Dr. Renu Chaudhary, DRC. But if it is required, we can give it very quickly and provide it. Hello? Yes, sir. Yes. Okay. Now DRC Dr. Renu Chaudhary, enrollment ki randomly you can type 1563. So whatever you want to type here, you can type, no issue. Now subject area, you have to choose your area. Suppose you belong to the business economics, accordingly you can go. Otherwise, if your subject is not available in the list, you can go with the other. Clearly, suppose you belong to political science, they have to political science. Otherwise, business and economics. Student level, postgraduate, career technical, graduate, whatever you want. They suppose postgraduate. Class started by default you will get. Class ended you have to define, and you have to set over there according to your requirement. Suppose 8 August 2020. Now submit. Continue. No need to remember class ID enrollment key. Just continue. Now your class has been created. Now for uploading any document, what you have to do, just this is your DRC. Just double click over there. Okay. Before you and your students can submit a paper, you first need to create an assignment. आपको assignment create करना है. Add assignment. Very easy. Just click on add assignment. It is working. And here is some settings you have to do. Assignment title. Just click over there. Whatever you want to write here, you can write your name, thesis, dissertation, whatever you want. You can do the same. Point value. No need to mention. Allow any type, you have to remain with the allow any type file.
and optional setting, that is very important. You have to click on the optional settings, close setting, that is optional setting. Many settings you will get by default, but you have to be very careful for the settings of the repository. Clear? Just here, submit papers to repository. There are 4 options. One is standard paper repository, social paper repository, student's choice of repository, and no repository. So unless until you O2, you have to remain with the no repository option. Otherwise, whatever you want, you have to select the same and just click over there. So what would be the consequences? What would happen? Whenever you will upload your document, it would be deposited by default in the repository, whatever you have selected over there. So what would be the consequences? When you upload second time, it will show the 100% similarity with the same document because you have chosen the repository. Clearly? So unless until you O2, you have to remain with the no repository option. तो इससे क्या होगा, जब अपलोड करेंगे तो कहीं नहीं दिखाएगा दोबारा, चाहे वो एक बार 10 बार अपलोड करें, वो उससे सिमिलरिटी नहीं दिखाएगा. So you have to be very much careful with the settings of the repository. Submits papers to no repository. Now see here, e-rater facility is there. If you will choose the no, then no, it will not work. E-rater, just go with the yes. It will check the spelling, your sentence framing, your grammar, your usage, your mechanics, and your style. So it will work accordingly, but it will work up to 4,000 words. अगर आपके डॉक्यूमेंट में 64,000 वर्ड है तब ये काम करेगा, इससे ज्यादा है 60 it will not work. Clearly, then you have to select with the high school, advanced grammar, whatever you want to choose according to your standard, you can go with. Suppose you want to go with the advanced, then advanced, US English, UK English, or both, you can go with the 1 by 1 and both, no issue, and you have to submit. Clearly, ये आपने submit कर दिया. One thing was there, यहाँ पर more option, your class is ready just to take the document. But edit setting, I wish to share one thing you over there. That is class start date, by default your due date and post date. What is the meaning of the due date? Due date means, अब आप देखिए, मैं बताता हूँ इसको क्या करना है. Just go back. पहले हम वापिस जाते हैं, सबमिट करके इसको वापिस जाते हैं. ध्यान रखिएगा. सपोज कीजिए डॉक्टर रेणु चौधरी के पास 20 स्टूडेंट्स हैं. क्लियरली 20 students are working under the Dr. Renu Chaudhary. Then, and she is busy some other assignments. She has no time just to entertain every time every document of their students for checking the similarity. उनके पास इतना समय नहीं है कि वो हर बच्चे को हर बार उसका डॉक्यूमेंट को चेक करके दें. तो वो क्या करेंगी? अब देखिए मैम, you are the instructor of that class. आप उस क्लास के इंस्ट्रक्टर हैं. Then what you have to do? Student, you have to click on the students. Just click on the students. Clear? आप add student, अगर आपके पास एक स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट का कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल आईडी. क्लियर? अगर आपके पास स्टूडेंट ज्यादा हैं, then what you will do? Upload student list. Then you have to create a list of the students in the Excel format. What would be the format? Click here, more information. That would be the format. ABC, first name, last name, and the email ID of the concerned student. Thereafter, you have to give the path where your document is available, choose your file and upload the same. Sir, what would happen? इसके बाद क्या होगा अब आप देखिए. उसके बाद ये होगा कि जो आपका ये इंटरफेस है जिसको आप यूज कर रहे हैं, यही इंटरफेस आपके स्टूडेंट के पास चला जाएगा. लेकिन स्टूडेंट सिर्फ उसमें अपलोड कर सकते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते. दे कैन नॉट मेक एनी चेंज इन द सेटिंग्स. They cannot do anything except uploading the document for the teachers. और टीचर उनके इंटरफेस एज इट इज चला जाएगा और इंटरफेस को यूज करके वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, जिससे मैडम की समस्या खत्म हो जाएगी. और वो अब मैडम क्या करेगी, मैडम क्या कर सकती है, उसके बाद मैडम को क्या करना है, मैडम को ये करना है. अब देखिए जरा, सॉरी, एडिट सेटिंग. अब जो मैडम के पास 20 स्कॉलर्स हैं, मैडम ने कहा कि मुझे जो है 11 फरवरी 2022 तक आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. क्लियरली? तो ड्यू डेट आपने दे दी 11 फरवरी और पोस्ट डेट आपने डिफाइन कर दी कि 12 फरवरी को जो मैं कमेंट्स दूंगी वो आप 12 फरवरी को देख सकते हैं, या अकॉर्डिंगली यू कैन सेट योर डेट. क्लियरली? तो 11 फरवरी के बाद क्या होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके पास, जो भी स्टूडेंट जिनके पास इंटरफेस गया है, whosoever get the interface, जिसको मिला है या whosoever got the same, जिसको मिला है, वो क्या करेगा, 11 तारीख के बाद वो नहीं अपलोड कर पाएगा और जो डिफॉल्टर्स है अपने आप पकड़े जाएंगे. वो तो जो अपलोड नहीं करे, क्योंकि ड्यू डेट के बाद अपलोड नहीं कर पाएंगे वो कोई भी डॉक्यूमेंट. क्लियरली? तो वो ड्यू डेट का मीनिंग ये है,
that is for the teacher, and post date is also for the teacher. So you, according to your requirement, you can set and you can select the same. आप उसको सेट कर सकते हैं, अपनी डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो that will work accordingly. Now see here, ये तो था टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स को ऐड कर सकता है, जो इंटरफेस उसके पास चला जाएगा और वो यूज कर सकते हैं, टीचर उसकी रिपोर्ट को देख सकता है. नाउ सी हाउ यू विल सबमिट. नाउ सी हियर सबमिट. Single file upload you can do, or multiple files upload you can do. For multiple files, some parameters are there. You have to follow all these parameters. Accordingly, you can submit your documents one by one. Simultaneously, you can 20, more than 20, maybe 100. So, following these parameters, you can upload maximum documents from your end. Clearly. Otherwise, if you have the single file, then you have to go with the single file upload. Clearly. So first name, last name, and submission title, and where your file is available. Choose from this computer. If it is available in my laptop, you can choose the same and you can upload the same. Thereafter, the software will ask for the confirmation. Then you have to confirm the same. Very easy process. Just see here. Suppose A, B. आप नाम लिख सकते हैं अपना यहाँ पे, और मैं तो simply ABC लिख रहा हूँ. And where is my document? Suppose my document is available, this, and open. It will upload. बस अब 2 मिनट और बस अभी. कोई डॉक्यूमेंट है भी है कि नहीं? अपलोड, सॉरी, uploading. Taking time, maybe 1 minute, 2 minutes, not more than 3 or 5 minutes. I think sir AVI फाइल है, ये कोई वीडियो फाइल लग रही है कुछ. हाँ, ये भी लग रहा है, मुझे लग रहा है. चलो कोई बात नहीं सर, देख लेते हैं उसको. ये अपलोड के बाद यहाँ कंफर्मेशन मांगेगा आपसे. ठीक, क्लियर? तो आपने उसको कंफर्म कर देना है, और कंफर्म के बाद क्या होगा? what would be happen over there? कंफर्मेशन के बाद एक आईडी जनरेट करेगा, सबमिशन आईडी. तो यू हैव टू नोट डाउन द सेम. सबमिशन आईडी को नोट डाउन कर. यू जस्ट मेक ए हैबिट. Whenever you uploading any document onto the platform of the Turnitin, it will generate, whether the same document you will upload 100 times, it will generate the 100 unique ID for the same. You just note down the same. उस सबमिशन आईडी को नोट करती है. अब क्या होगा? सपोज करो बाय डिफॉल्ट, इनएडवर्टेंटली अगर आपका डॉक्यूमेंट उसकी रिपोजिटरी में चला गया है, तो दिस इज ओनली द वे जस्ट टू डिलीट ओवर देयर एंड जस्ट टू टेक इट बैक ओवर देयर. आपको सबमिशन आईडी मांगते हैं वो, और सबमिशन आईडी आपको देनी होगी. उसके बाद ही वो उसको डिलीट कर पाएंगे वहां से, अगर वो बाय चांस हो जाता है. Clearly. Now see here, I will show my class to you. होम पे जाता हूँ. आफ्टर अपलोडिंग, अब आप ये दिखाइए, मैं अपनी क्लास ओपन करता हूँ क्योंकि टाइम लेगा अपलोड करने में. और ये ऐसे दिखाएगा आपको. यहाँ पर जब अपलोड कर देंगे, आपको गो टू इन योर बॉक्स, आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पर आ जाएगा. तो जब तक सिमिलरिटी नहीं दिखाता, तो 1-2 मिनट के बाद आपको रिफ्रेश करते रहिए, आपको ये सिमिलरिटी दिखा देगा. क्लियरली ऐसे दिखाएगा सिमिलरिटी. सपोज करो ये देखिए CDLU 21% डॉक्यूमेंट है, मैं इसको क्लिक करता हूँ. व्हाट वुड हैपन? दिस इज द रोल ऑफ द टीचर ओवर देयर. अब कभी भी आपने बच्चे को नहीं कहना कि लाइब्रेरी में जाएं. लाइब्रेरी विल हेल्प, नो डाउट. Library, in which sense library will help? Library will tell you that, library will orient you that how you will use the software and effectively how you can use the same. So, but library will not do the analysis, and library will not do the analysis because library, suppose you belong to the mathematics department and I am a man of the library science. How I will identify what would be the common terms in your document, in your mathematics? I won't be in a position to tell that would be under the common knowledge, and that would be under the similarity, that would be under the plagiarism. I'm not in a position because I'm not the man of the mathematics. So that must be checked in the presence of the concerned teacher and the students. And if you are not knowing how to use the same, then you can take the help of the librarian. Clearly, but check in your presence. आप अपने presence में check कीजिए. Suppose grading नरेंद्र E-Rater भी लगा दिया मैंने. Okay. Now see here. This method very reduced, very common terminology. It is showing the similarity. Don't feel that it is the part of plagiarism. It is the part of the similarity. But here, see, it is showing in the substantial form. It means this is the part of plagiarism. You can direct your students just to make changes in it, just to rephrase the same. How you will give the comments on the same?
सपोज कीजिए डॉक्टर चौधरी के बच्चे ने यूज किया, आपने उनकी रिपोर्ट ये देख रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये यहाँ पे क्विक मार्क्स पे जो टिक है इस पे क्लिक कीजिए। ओके मैडम, सपोज आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये बच्चे ने दिया है, इसका साइटेशन नहीं दिया, या आप कुछ और करना चाहते हैं, यहाँ पर इसको ड्रैग कीजिए और इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ये यहाँ पे, और यहाँ पर क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, जस्ट वेट, वर्किंग, क्या हो गया, हाँ यस, and give your comments over there. Suppose you want to, you can write here, please rephrase the same clearly. ये आपका, इसके बाद बच्चे को जब ये देखेगा यहाँ पे ये मैसेज, तो ये लिखा प्लीज rephrase the same. So likewise you can do the same. If you feel that commonly confused, if you feel that improve writing skill, if you feel that language is poor over there, you can drag the same and just put here and can give your comment. You can add your comment over there. So according to your post date, अब याद कीजिए पोस्ट डेट मैंने बताई थी, so whatever comments and compliment you are giving on the report of any students, according to post date, they would be able just to see the compliments or the comments of the teacher. ये वही उसके बाद ही देख पाएंगे वो क्लियरली, उस जो आपने इंटरफेस तो चला गया उनके पास, लेकिन जो पोस्ट डेट आपने डिसाइड किया क्लियर, तो ये इस तरह से आप उसकी रिपोर्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू पोस्ट डेट दे कैन सी द कमेंट्स ऑफ द टीचर एंड अकॉर्डिंगली दे कैन मॉडिफाई देयर डॉक्यूमेंट क्लियरली। तो इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। ये टीचर एक तो ये कर सकता है। नाउ टीचर क्या करेगा, ये आप इस पे क्लिक कीजिए, जो ये डाउन एरो है इस पे ऑल सोर्सेज दिखाएगा इस पे क्लियर। तो अगर आपको टीचर को जाना होगा वन बाय वन, क्लिक ऑन दिस सोर्स, जस्ट वेट। जब मैंने फर्स्ट सोर्स पे क्लिक किया, वेट, जब मैंने फर्स्ट सोर्स पे ये दिखा रहा है रिड्यूस ग्रेफेन ऑक्साइड, आपको पता, आपको लगता है कि प्लेजिंग पार्ट नो, अगर आपको लगता है प्लेजिंग पार्ट नहीं है, देन व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट एक्सक्लूड कीजिए और इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको एक्सक्लूड कर दीजिए आप। अभी आऊंगा 5 मिनट में क्लियरली। सो वन बाय वन द टीचर हैज टू चेक ऑल द सोर्सेज, वन बाय वन सभी सारे सोर्सेज को चेक करना होगा। मे आई हैव अ क्वेश्चन हियर? हाँ सर, जस्ट प्लीज पूछिए। सर बेसिकली जब हम ये करते हैं तो आपने भी हमें बताया कि हम लाइब्रेरी में जाते हैं, मैंने भी अपनी लाइब्रेरी से ही करवाई थी, टीचर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था उस टाइम पे। तो बेसिकली आज भी हम यही करते हैं, हम लाइब्रेरी में भेज देते हैं, लाइब्रेरियन रिपोर्ट दे देता है। सर मैंने यही कहा था, मैंने स्टार्टिंग में यही कहा, दिस इज मिसिंग इन आवर एकेडमिक्स, व्हाट वी आर डूइंग द सेम प्रैक्टिस। आई एग्री विद यू सर जी। बट प्रेजेंट सिनेरियो में भी हम क्या कर रहे हैं कि हम लाइब्रेरियन और सीओई जो बीच का जो उनका वे है जी, उसको इनक्रोच नहीं कर पा रहे हैं। मींस अगर मैं वहां पे लाइब्रेरियन के साथ में बैठ के कहूं कि इन चीजों को एक्सक्लूड कर दीजिए, तो एम आई द राइटफुल पर्सन टू सेइंग हिम? सर, इफ यू आर द सुपरवाइजर एंड द गाइड ऑफ द कंसर्न स्टूडेंट, you are the right person and you are the final arbiter, you are the final authority just to decide the things. सर इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन कुछ मिल जाए तो बेटर रहेगा सर। सर यूजीसी का जो नोटिफिकेशन है ना, यस सर, 18 वाला, उसको डाउनलोड कीजिए वेबसाइट से। हाँ यस सर। अच्छा मुझे आप बताइए ना, उसको ये पूछिए लाइब्रेरियन को, कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? सर मैं बेसिकली बहादुरगढ़ से बिलोंग करता हूँ और एमआईटी यूनिवर्सिटी हरियाणा में लॉ पढ़ा रहा हूँ सर। एमआईटी यूनिवर्सिटी हरियाणा नहीं, अच्छा एमआईटी यूनिवर्सिटी में आपकी वो? जी। आप उनसे ये पूछिएगा कि जो लाइब्रेरियन जो कर रहा है क्या लोक आदमी है वो लोक की टर्मिनोलॉजी कैसे जानेगा? क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है, जब मैंने वर्क्स एक्सक्लूजन दिखाया था ना आपको, जी, जो वर्क्स एक्सक्लूजन होंगे रिप्रोड्यूसिबल, लाइब्रेरी को क्या पता इसने परमिशन ली है नहीं ली है, या कॉमन नॉलेज का पार्ट है या नहीं है? जी। बिकॉज हमारे में केस लॉज होते हैं सर, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केसेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे क्लॉज होते हैं जिनको लाइब्रेरी नहीं बता सकता, ओनली टीचर विल डिसाइड व्हाट वुड बी द पार्ट। क्लियर सर? तो अगर आप ऐसा करता है तो यू कैन टेक द प्ली ऑन बिहाफ ऑफ द यूजीसी रेगुलेशन 2018। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी। अब नाउ अब कहाँ गया रिपोर्ट, जस्ट वेट। ओके, तो टीचर को वन बाय वन सभी सोर्सेज को देखना है, और टीचर अगर ये लगता है कि ये प्लेजिंग का पार्ट नहीं है तो टीचर एक्सक्लूड कर सकता है उसको, क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम है सिर्फ सिमिलरिटी को दिखाना, ना कि आपके प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करना। सॉफ्टवेयर तो सिमिलरिटी दिखाएगा, ना कि प्लेजिंग को डिटेक्ट करेगा। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द टीचर, जस्ट टू डिसाइड व्हाटएवर वुड बी इनसाइड एंड व्हाटएवर वुड बी आउटसाइड। क्लियरली? नाउ सी हियर,
This is the funnel type. Just see here the sign of the funnel type. Click over there. Exclude quotes. So whatever material you are giving in the quotes, that would be excluded. If you have to click on. अगर आपको ऐसे मिलता है ना ये, तो just select the same. Exclude bibliography, इसको भी select कर दीजिए. और ये रहा 14 consecutive words का जो मैंने बताया था. 14 वर्ड्स का फिल्टर आपको यहाँ पर लगाना है. ऑलरेडी लगा हुआ इस पे डॉक्यूमेंट पे, तो और आपको अगर नहीं लगा तो आपको ऐसे लगाना है. नॉट 1% नॉट परसेंट वाला आपको वर्ड वाला लगाना है. ठीक है, तो ये आप फिल्टर अप्लाई करेंगे. उसके बाद जो होगा, उसके बाद एनालिसिस कीजिए. सबसे पहले आपने फिल्टर ही लगाना है. अगर फिल्टर लगा है तो ठीक है, उसके बाद आप एनालिसिस कीजिए. सबसे पहले अगर फिल्टर नहीं लगा तो आप लगा दीजिए और अप्लाई कर दीजिए इसको. ये अप्लाई. क्लियर. नाउ सी हियर, सपोज कीजिए डॉक्टर चौधरी का मैं स्टूडेंट हूं. उन्होंने ये कहा कि ले भाई इसको एनालिसिस अपनी रिपोर्ट डाउनलोड किया. मैंने क्या किया, हरी बरी के अंदर आपने सबमिट कराने के लिए जो एक सोर्सेज थे उनको एक्सक्लूड कर दिया अप टू 10% तक लाने के लिए. मैंने कोई चेक नहीं किया, उसको फटाफट एक्सक्लूड किए. वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ सिमिलरिटी और द प्लेजरिज्म. ये सिमिलरिटी का पार्ट था, मैंने कुछ नहीं देखा. ये प्लेजरिज्म का पार्ट था. मैंने सिर्फ उसको 10% पे लेके आने के लिए फटाफट सारे सोर्सेज को एक्सक्लूड कर दिया और सबमिट करा दी. और मैडम को लगा कि नहीं कुछ मैनिपुलेशन है डॉक्यूमेंट में. देन हाउ द मैडम विल ट्रैप. आपको उसी यहीं पे वापस आना होगा. और ये साइन देखिए, जो ये साइन है, इस साइन पे क्लिक कीजिए आप. So whatever I have excluded, so all these are available. Only 2 options are available. Not the deletion option is not available. I cannot delete the same. Even you cannot delete the same. So you can restore all. Here is the option, or you can restore one by one. Just click over there and restore it. And in a one time you can restore all these things clearly. So this is a wonderful tool. This is a very authentic tool in the hand of the teacher. If any student manipulates his her document, clearly. तो वो ऐसा कर सकता है. नाउ सी हियर, अगर आपने वहां पर कंफर्मेशन के बाद किसी डॉक्यूमेंट की आईडी, सबमिशन आईडी नोट करना भूल गए, तो ये देख लीजिए यहाँ पर. व्हेन यू क्लिक ऑन द लास्ट, देयर इज सबमिशन आईडी. ये रही सबमिशन आईडी. इसको नोट कर लीजिए आप. इसको नोट करके रखिएगा. अगर डॉक्यूमेंट डिलीट हो गया और डिपोजिटरी में चला गया तो आप इसके भी यहाँ पे उसको हटा सकते हैं वहां से. नाउ सी हियर, डाउन एरो, क्लिक ओवर देयर, डाउन एरो. करंट व्यू, डिजिटल रिसिप्ट. इफ यू वांट the digital receipt of document, then click over there. It will produce and it will create the digital receipt for you. And current view means when you will click on the same, it will generate the report. ये रिपोर्ट को जनरेट कर देगा. तो कैसे दिखेगी रिपोर्ट आपको मैं दिखा देता हूँ. जस्ट वेट. आपको रिपोर्ट दिखेगी ये ऐसे. डाउनलोड. ऐसे दिखेगी आपको. जो आपने टाइटल मेंशन किया, मैंने सिंपल लिखा था. मैंने अपना पूरा टाइटल लिख सकते हैं आप. बाय कोमल डांडा, और सुपरवाइजर का नाम लिख सकते हैं. सेकंड जो नेम है वहां पर सुपरवाइजर का नाम लिख सकते हैं. ये रही सबमिशन डेट, सबमिशन आईडी. ये रही सबमिशन आईडी, यहाँ पर भी है. और आपका ये डॉक्यूमेंट दिखा रहा है कितने % सिमिलरिटी है. इट इज शोइंग द सिमिलरिटी लेवल. कुछ एरर है इसमें, रिपोर्ट में एरर आया, वो दूसरे दिखाता हूं आपको. Yes, this is the perfect report. Yes, 21% आपको यहाँ पर दिखाएगा. और उसके साथ दिखाएगा आपको कि एक्सक्लूड कोड्स ऑन थे, एक्सक्लूड बिब्लियोग्राफी ऑन थी, और एक्सक्लूड मैसेज लेस देन 14 वर्ड्स. 14 वर्ड्स उन्हें दिखाए जाए. तो मैनिपुलेट नहीं कर सकते. ये सारी चीज पीडीएफ में है, ये इसको चेंज भी नहीं कर सकते आप. हो सकता है कि आप वर्ड में ले जाएं, इसके फॉर्मेट चेंज हो जाएगा. ले जाते ही ना वर्ड में आप सोचिए, वर्ड में कन्वर्ट करके इसको चेंज कर लेगा. नो, इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा सारा. सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड. If you have any query, any question regarding plagiarism, regarding anything, regarding similarity, regarding software, regarding open education resources, regarding anything, if you have any query, so you can ask me, I will tell you. I am supposed to address all your queries. Clear? So you can download the report. This is the way just to get the report from the platform of the software. Yes. Thank you very much. सर क्वेरीज के लिए इनवाइट कर लो पार्टिसिपेंट्स को. Yes, madam. Yes, I already declared that you can. Thanks a lot, sir, for such a very informative session. I extend my gratitude to take out this time to grace this FIP 6. So today we want to know how we can access any data for our research work and projects, and what is the plagiarism, role of teachers, and authenticity of ISSN number, citations, index factor, impact factor of a journals, and a lot of things. So turn on your camera
and I invited to all the participants for any queries. Sir is here. So please switch on your camera. Turn on your camera, please. Thank you, ma'am. I'm requesting to you that turn on your camera. Thank you so much. Good afternoon, sir. जी गुड आफ्टरनून सर एक क्वेरी और है, अभी मैं मेरे अंडर 4 कैंडिडेट पीएचडी करवा रहा हूँ, प्लीज बताइए सर। हाँ जी बताइए। इसीलिए थोड़ा कंसर्न हूँ इस चीज के रिगार्डिंग कि अगर प्लेगरिज्म ज्यादा है, आपने 3 कैटेगरीज डिफाइन की, 0 to 10, 10 to 40, 40 to 60 और अबव 60। जी अबाउ 60 में तो वो सबमिट ही नहीं करेगा उसको। तो ये जो रीसबमिशन का टाइम है, ये प्लेगरिज्म तो हम पहले ही चेक कर लेंगे, ये प्लेगरिज्म कहाँ कौन सी स्टेज की बात हो रही है सर? फिर ये सपोज कीजिए सर आपने अपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया जी, ठीक है, और वो जो है डॉक्यूमेंट 10 to 40% पे आ रहा है आपके स्टूडेंट का, तो उसमें आपको स्टूडेंट को कह दिया जाएगी, और वो स्टूडेंट उसको सपोज कीजिए आपने पहले चेक कर लिया उसको, अगर पहले चेक हो गया तो कम आ रहा तो कोई इशू है ही नहीं है। हाँ फिर तो नहीं है सर। हाँ अगर वो आ रहा है 10 to 40 आ रहा है स्टूडेंट का, तो फिर स्टूडेंट को आप कहेंगे कि आप जो है इसको जो है ना 6 मंथ के अंदर दोबारा कराएं। ओके ठीक है सर। सर एक और इशू मैंने जो देखा था, मेरे साथ जो थे पीएचडी कर रहे थे उस टाइम 2013 की बात है, सो किसी की वापस आ गई थीसिस वहां से, उन्होंने बोला कि ये कॉपीड है, बट प्लेगरिज्म रिपोर्ट तो उसके साथ गई थी, वो क्या सिचुएशन होती है सर? नहीं सर वो देखिए, या तो उसने जो प्लेजरिज्म है वो चेक नहीं किया प्रॉपरली, उसको डॉक्यूमेंट का मैनिपुलेट किया कहीं ना कहीं, या फिर जो उन्होंने चेक किया वो किस प्लेटफॉर्म पे किया। सपोज कीजिए अगर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट आई वहां से, ये रिपोर्ट भी कॉन्फिडेंशियल होती है, जितना मुझे पता चला वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए सुनिए आज की डेट में इट इज द टाइम ऑफ द आरटीआई, नो नथिंग इज कॉन्फिडेंशियल ओवर देयर। अगर उन्होंने कहा कि प्लेगराइज है, ऑन व्हाट ग्राउंड दे सेड दिस इज प्लेगराइज्ड? हैव दे सबमिटेड एनी प्रूफ? हैव दे प्रोवाइडेड एनी प्रूफ फॉर द सेम? नो सर। यू कैन इवैल्यूएटर ने कहा ये। हाँ सर, इट वाज योर ड्यूटी जस्ट टू आस्क फ्रॉम द इवैल्यूएटर दैट जस्ट गिव द प्रूफ वेयर इट इज प्लेगराइज्ड। ओके ये कहाँ पे प्लेगराइज हुई है, दिखाई मुझे, बताइए। हाँ वो तो पूछना पड़ेगा सर। वो सर उसने पता कि क्या किया उसने, जो एलिवेटर ने, या तो उसके पास सेम नहीं होगा। हाँ उसने कह दिया कि चलो ये कहते प्लेगराइज है, वापस भेज दी उसको, ये कह के उसको। हाँ उसके रिगार्डिंग सर स्कॉलर का तो 1.5-2 साल का टाइम चला गया। हाँ यस, यही तो प्रॉब्लम है सर। तभी तो उन्होंने पीरियड को डिफाइन किया, इन पीरियड ऑफ 45 डेज। अगर कोई कंप्लेंट होती है तो 45 डेज के अंदर दे हैव टू रिप्लाई। आपको जो उस गाइडेंस वैल्यूएटर ने कहा ना, तो आप उसको डीआईपी में ले जा सकते थे, आईआईपी में ले जा सकते थे। अगर वो प्लेगराइज नहीं था तो वो उसको ब्लैकलिस्टेड किया जा सकता था उस इवैल्यूएटर को। ओके सर, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी ब्लैकलिस्ट हो सकता था वो। ओके सर। हाँ जी, थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू। काफी अच्छा लगा, आपके यहाँ पे काफी नॉलेजेबल चीज है सर। जी मैं इस फील्ड में बट काफी दिनों से नहीं पता था इन चीजों का। जैसे आपने जो टर्निटिन आज एक्सप्लेन किया है काफी अच्छे वे में, और शायद मैं भी स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँ इन फ्यूचर। हाँ, सर। ये तो काफी परेशान होते हैं सर कि 10% नहीं आ रहा है, और लॉ में बेसिकली हम केस लॉ सजेस्ट करते हैं। केस लॉ सजेस्ट करते हैं सर आप ना, वो यस, और उसमें काफी डिफिकल्टी है सर। डिफिकल्टी है, उसको बताया मैंने कि आप कैसे कर सकते हैं उसको सर। जी सर। अच्छा सर, एक सर परमिशन लेने की बात है जो आप कह रहे थे, परमिशन लेनी पड़ती है कि हम आपकी चीज को साइट कर रहे हैं, वो परमिशन इन द फॉर्मल वे? वो हर चीज का नहीं है परमिशन सर। जी सर। कोई एक ऐसा मॉडल आपके यहाँ पर बना है जो आपको लगता है कि ये भी अपने आप में यूनिक वन है, और आप उसको एज इट इज लेना चाहते हैं, उस मॉडल पे आप काम करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका एरिया अलग हो उसका डाटा कलेक्शन का, या आपका स्टडी का एरिया अलग हो, लेकिन उसी मॉडल पे काम करना चाहते हैं आप। अदरवाइज सर जैसे मैंने साइट कर दिया, फुटनोट दे दिया, रेफरेंसेस में दे दिया। नहीं सर, ये हर फील्ड का अलग अलग है सर। अब देखिए, आप सपोज कीजिए आप कोई सर्वे करते हैं जी, आपके फर्स्ट प्राइमरी उस पे कर रहे हैं आप, जो है ना क्वेश्चनेयर बेस आप सर्वे कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चनर आप स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर है वो, या खुद बनाया, अगर खुद बनाया कोई, अगर आपने कोई सपोज कीजिए कोई ऐसा स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर बना हुआ है जो ऑलरेडी एक्सेप्टेड इंटरेस्ट लेवल पे, उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी उसका क्वेश्चन यूज करने के लिए। जिसने वो जनरेट किया था, जिसने वो ड्राफ्ट किया था। यस, जिसने वो ड्राफ्ट किया था, जिसने उसको बनाया था। ओके। अदरवाइज फॉर एग्जांपल आपने कोई रिसर्च की है, कोई बुक है आपकी, या कोई आपकी, हाँ वो तो सर आप साइट कर सकते हैं उसको, तो साइट कर सकते हैं। जी सर, साइट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी Thank you very much, sir. Any other queries? Now over to Paris, sir, for vote of thanks. Paris, sir. चलो, yes, sir. हाँ जी मैम एक God, I'm the Paris, sir. हाँ जी, रवि राठी जी बोलिए। सर एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था सर, कुछ जो जर्नल्स है ना सर, जैसे रिसर्च पेपर और थीसिस का आप
ने बताया तो थीसिस में तो बिलो 10% प्लेगरिज्म होना मैंडेटरी है। वेबसाइट पे दिखाते हैं कि आपका बिलो 25% जर्नल प्लेगरिज्म है जो भी होगा सब वो भी ऑनलाइन अपने हो जाएगा। तो सर उस केसेस में आप यूजीसी के नॉर्म्स को फॉलो करेंगे? नहीं सर, हम उसके सर जो पर्टिकुलर पब्लिकेशन हाउस है या पर्टिकुलर पब्लिशर उसकी क्या पॉलिसी है, अगर उसने यूजीसी की पॉलिसी को लिया हुआ तो 10% होगा, अदरवाइज उसकी जो पॉलिसी होगी 10, 15, 20 व्हाटसोएवर। क्लियर? नमस्कार सर। ओके, थैंक यू सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या हिंदी में भी प्लेगरिज्म चेक होता है सर? अरे वाह सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, जितने भी इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं वो हिंदी लैंग्वेज को अभी सिर्फ वो 30 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस को कवर करते हैं, हिंदी को नहीं करते। लेकिन हिंदी के लिए जो उर्कुंड में उन्होंने क्या किया है, उर्कुंड में 2 फॉन्ट दिए हैं, उन 2 फॉन्ट को वो पकड़ लेगा। जो भी हिंदी कृति है, एक और है, कौन सा है मेरी याद नहीं है वो, और एक शायद दूसरा ऑप्शन सर ये है कि एक इंडियन मेड सॉफ्टवेयर बना है चेक फॉर फ्लैग। ओके सर। एक इंडियन मेड सॉफ्टवेयर है चेक फॉर फ्लैग, CFP। वो जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, चाहे मराठी है, गुजराती है, अरे कोई भी है, जो आपकी हिंदी है, कोई भी है, वो सभी हिंदी के साथ साथ जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की, उन सबको वो उनको सबको एक्सेस करता है। ठीक है सर। ठीक है जी। हाँ जी। क्योंकि सर बच्चे तो हिंदी में तो PhD करते हैं ना सर? हाँ सर, हिंदी में भी करते हैं, और हिंदी के लिए अभी अब यही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। उर्कुंड में उन्होंने 2 फॉन्ट को दिया है। ओके सर, थैंक यू जी। Thanks again, sir. Now over to Paris, sir, for vote of thanks. रेणु जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं रोहतक से हूँ और गुड़गांव में जॉब कर रही हूँ सर। अच्छा, गुड़गांव में किस उसमें? सर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ लॉ सर। ओके ओके ओके। लॉ वाले से वैसे बच के रहना चाहिए। Yes sir, exactly sir. Paris sir, are you there? हाँ जी Thank you sir. Informative session sir. जी, thank you. Yes sir. It's time to vote of thanks, sir. It was a wonderful session. You are giving us a lot of knowledge about National Digital Library, ISSN number, core, Sharappa and Romeo, Sherpa and Romeo, EPG Pathshala, JGate, and also giving us a lot of knowledge about plagiarism and how to use this. Your session is very interesting, loaded with knowledge and informative. I am very thankful to you on the behalf of the HRDC. Thank you so much, sir. I hope you enjoyed the session. Yes sir. Yes, sir. We had a lot. Okay. And gained a lot of things, sir. Thank you so much, sir. Thanks again, and thank you for all the participants. Now हम लोग लंच ब्रेक के लिए चलेंगे और 1:45 पे हम दोबारा यही इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। लंच सभी ने अपने अपने घर पे करना है। पहले तो ऐसा होता था, ऑफलाइन पहले तो ऐसा होता था। हाँ, जब ये मैडम पहले ऑफलाइन होता था ना, ऑफलाइन में क्या था, लंच ब्रेक जाने से लंच करके आते हैं भाई उसमें गेस्ट हाउस में, लेकिन अब लंच अपने अपने उसमें करना है प्लेस पे। अपने घर पे करेंगे सर। जी जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। रेनू मैम ने भी मौका ही नहीं दिया सर लंच करने का। एक्चुअली में सर बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, तो मुझे लगा कि कंटिन्यू रखेंगे, फिर बीच में थोड़ा सा वो टेम्पर थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर हम है ना लंच के लिए, चाय के लिए, तो उस सेम फ्लो में नहीं आ पाते, तो मेरे को लगा कि हम इकट्ठा ही लंच ब्रेक लेंगे। 1:40 हम लोग वापस आते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Thanks to all and have a great day. Thank you, sir. Thanks, sir. Thank you, sir.